Assalamu alaikum and welcome back. 13 is what Bastion Cricket Academy required to win this match. Good looking shot. Down towards this Skalak will get a single. He goes off the mark in style. Adil Zuhur is off the mark with that single. And Farhad Ghani comes back to strike. Adil underway with that single. So is Bastion Cricket Academy. Welcome Nazir in the comment box. स्वागत सभी व्यूअर्स का। दूसरी पारी शुरू हो चुकी है। 214 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए और यहां से फाइनल में प्रवेश करने के लिए तो कहना चाहिए आकर्षक मुकाबला। और दूसरी पारी दूसरी गेंद इस ओवर की, हालांकि खेला वहां पर 1 रन पूरा किया और 1 रन के साथ वो दोनों बल्लेबाज संतुष्ट और स्कोर बढ़ता हुआ 2 रन पहले ओवर में बगैर नुकसान के। बास्टन क्रिकेट एकेडमी जिन्हें के 214 रन चाहिए इस निर्णायक मुकाबले को जीतने के लिए। Well, Imtiaz left to open the attack for Bird Enterprise in this very first over. But Yasir Walaikum Salam and Ishfaq Ahmed Sheikh. Left arm pacer. That's a good looking shot, driven, handsome, but straight to the pillar. Won't be any run. It's 2 for none in over number 1. Somebody writes in Firdaus Khan playing 11 above the teams. Harun Khan followed by Junaid Qazi, Salim Dar, Zaid bin Nazir, Farhad, Sajjad, Robbie, Aqib Manzoor, Adil, Faizan, Adil Zuhur. This is the playing 11 of Bastion Cricket Academy. Ishfaq Ahmed joining us belatedly this afternoon. Well, followed by the other team, we got Bird Enterprises, Irfan lefty, Adil Border, Irfan Lala, Imtiaz lefty, Zaidar, Aqib Bika, Haris Sangin and Ishfaq Sheh. This is the playing 11 of Bird Enterprise. जी बिल्कुल। और इस बार अच्छी गेंद वहां पर प्रेशर और लेकिन असफल और गेंद निकल गई सीमा रेखा। इस चौके के साथ दर्शनीय स्कोर बढ़ता हुआ 6 पहले ओवर में बगैर नुकसान के 214 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। और इसमें अगर बीच मैदान में बात करें तो फरहाद और आदिल ज़ुहूर की जोड़ी बीच मैदान में बनी हुई। और गेंदबाजी की बात करें तो इम्तियाज है गेंदबाज जो कि पारी का पहला ओवर इस समय गेंदबाजी करते हुए। Well, with one slip in place, followed by Gully backward a point, good delivery on middle and leg, worked by nicely. We'll get another single. Score moves to 7, and look at this man, busiest man and the happiest man at the park, and at the crease right now is Adil Zuhur. He is nudging the ball in the gaps. And look at that, a beautiful cut up the backward down to the backward up point boundary for more runs, and he moves to 6 of 3 balls. Total moves to 7 of 5 balls for none. 7 रन पहले ओवर में बगैर नुकसान के ये गेंद और भाग का मौका इस्तेमाल, लेकिन अंतिम समय में देखा गेंदबाज ने वहां पर दिशा और लंबाई थोड़ी सी कम कर दी और दोहरे मन से रह गए बल्लेबाज बगैर किसी रन के। और संभवने ओवर पूरा हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 बगैर नुकसान के। आदिल और फरहद की जोड़ी समय बीच मैदान में बनी हुई। आकर्षक मुकाबला, 214 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और अगर बात करें शालबुग सुपर लीग वर्ष 2022 के अंतर्गत यह सफल प्रतियोगिता। और बर्ड एंटरप्राइजेस की बात करें प्लेइंग लेवल, इरफान लेफ्टी, आदिल बॉर्डर, इरफान लाला, इम्तियाज लेफ्टी, जाहिद डार, आकिब बिको, हारून और तजम्मुल उमर और हारिस और उनके साथ इशफाक। तो ये है प्लेइंग 11। बहुत ही आकर्षक और विश्वसनीय मुकाबला इस समय बीच मैदान में। अच्छी खासी दर्शकों की संख्या इस मुकाबले का आनंद लेती हुई। और अगर हम बास्टन क्रिकेट एकेडमी की बात करें, प्लेइंग 11 हारून, जुनैद काजी, सलीम डार, जाहिद बिन नजीर, फरहाद, सज्जाद मीर, रॉबी, आकिब मंजूर, आदिल, फैजान और आदिल ज़ुहूर। ये है जोड़ी समय बीच मैदान में। अगर बात करें तो आदिल ज़ुहूर और फरहाद की जोड़ी। दूसरा ओवर, पहली गेंद जगह मिली, ऊंचा लंबा स्ट्रोक, नीचे खिलाड़ी, बेहतरीन कैच पकड़ा और पहले विकेट यहां पे गिरते हुए। अगर बात करें बास्टन क्रिकेट एकेडमी की 7 पे पहला झटका। Well, needless from this man. Adil Zuhur throws his wicket away. You need a man out in the middle who puts premium on his wicket. Look at that, nothing short, playing straight down to the throat of the fielder there mid-on. He does well, hold us on to the ball. Nicely gobbled on the occasion. There goes wicket number 1, and Adil Zuhur is the first man to depart. Gone for 6. It's 7 for 1 after the completion of 1 over. We're into the second of the very first ball. Brought the wicket, and this man, it is Haroon, who has provided his side with a much needed breakthrough up front, and their confidence
is going to be dented to larger extent because their last wicket in the very second over of the innings. Look at the man, Adil Azur is walking back, and look at the man who's walking in is Ishtiyaq Ilahi. Robbie is coming to the crease, and look at this man. He can really go downtown. He can take the pacers on even the spinners, and the man is walking in. Looks like the one-man army. Is he going to be one-man army for today's match? जी बिल्कुल, हालांकि परिस्थितियां ऐसी है, दूसरे ओवर में इस समय पहली सफलता मिलती हुई और एक आकर्षक पारी खेलनी होगी। एक लोकप्रिय खिलाड़ी, अगर हम इस कश्मीर क्षेत्र की बात करें इश्तियाक रॉबी की, तो आज उस शैली के अनुरूप खेलना होगा। किस प्रकार से वो बल्लेबाजी करेंगे ये देखने वाली बात होगी। 7 रन पे पहला विकेट और कहना चाहिए संकट की स्थिति इस समय बीच मैदान में बनी हुई। Look at the allow for this man who's out in the middle. Shatantre writes in Firdaus, but walaikum salam. Shatantre, Mir Manzoor and others. Thank you for your love. This broadcast is brought to you by Arco Fenestration, followed by Anthem Sports India, Fashion Fiesta, Shining Star Popper, MHM, Multi-Brand Fashion Store. Firdaus, thank you for your love. Lone Firdaus and Smart Shabir. And there comes Ishtiyaq Ilahi. Robbie is in for this wonderful game of cricket. This is really going to be a big match of the summer. The second semi-final coming your way. Ali Jana are in the grand finale of Shalbugh Super League 2022. Over number 2 in progress. Harun, the man was provided. He's side with a much needed breakthrough. The next man in is Ishtiyaq Ilahi. He will be waiting for the pacer Harun. Harun will bowl the second ball of his successful over. So far continuing with his over. That's a good ball. Straight away he wanted to go downtown of the very first ball. Beaten all ends up. Luckily the ball didn't found an edge and he survives that with his case. 7 for 1. We are in over number 2. जी बिल्कुल, 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर इसमें प्रगति पर और इश्तियाक इलाही का आमंत्रण हुआ क्रीज पर, तो सभी निगाहें उन पे बनी रहेंगी। आशा करते हैं उनके क्रिकेट के समर्थक दीवाने इस मुकाबले में आनंद देखने को मिले। इस ओवर में अगली बार सामने वाले छोर से ये गेंद इश्तियाक के लिए, उस बार पूरी तरह से गेंद की लाइन में आकर उसको खेला जरूर। वहां पर खिलाड़ी है तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी टिका हुआ 7, 1 विकेट के नुकसान पे। मुजम्मल रशीद, उमर बुखारी लगातार हमारे साथ बने हुए। बहुत बहुत स्वागत सभी व्यूअर्स का जी के स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से, और इसी प्रकार से बने रहिए, अपना प्यार और विचार देते रहिए ताकि आने वाले समय में और भी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन आप तक पहुंच सके सीधे प्रसारण के जरिए। इस ओवर में अगली बार इश्तियाक के लिए ये गेंद स्टंप पर आती हुई गेंद को हल्के से प्लेस जरूर किया, पीछे है खिलाड़ी जब तक उसको फील्ड किया जाता। 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ और 1 रन के साथ ही दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। कुल योग 8, 1 विकेट के नुकसान पर 1.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद आकर्षक रोमांचक स्थिति इस समय बीच मैदान में बनी हुई। और जुड़ जाइए जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से इस महा मुकाबले में, जो कि कांटे की टक्कर का सेमीफाइनल मुकाबला इस समय बीच मैदान में शालबुग के इस ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम में चलता हुआ। यह गेंद उस बार अच्छी गेंद, हालांकि बल्ला जरूर चलाया, छकाती हुई वहां पर सीधे विराम करते विकेट कीपर के दस्ताने में। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। स्कोर अभी भी टिका हुआ 8, 1.5 के बाद बास्टन क्रिकेट अकेडमी जिन्हें की जीत के लिए 214 रन बनाने हैं इस मुकाबले में। A big target really awaits them. 214 is going to be a mammoth one. An uphill task really awaits the guys, but the 2 batters out in the middle is Farhat Ghani and his colleague Ishtiyaq Robbie. Robbie is at the non-strikers end. On strike. Thank you, Nasir Mir, for your love. And Mushtaq Ratha. He comes charging down the track in the air. And he had his hurt in his mouth for a while, but the ball dropped short of the fielder there at mid-off what could have been another blinder of a catch. But the ball dropped short of the fielder, Muzammil Rashid, Mir Manzoor and Ehsan Khan. Thank you all the beloved viewers for joining us, for dropping in your invaluable comments. We are really indebted to your love. You can send us the digital token of love via digital stars. So start sending in the stars. We will include your comments. And thank you for joining us this afternoon. And this is inning number 2 coming to you live and exclusively from Shalbugh Sports Field. The match underway between Bastion Cricket Academy and Bird Enterprise. Lon Saeed, walaikum salam, Chaudhry Shabir and others. And this match is the second semi-final of this very league. The 2 umpires of the match, we got Sheikh Faizan and Ibu Atif. And we'll go through the organizing committee of Shalbugh Cricket Board members. Sheikh Faizan Manzoor and Urfid Ahmed Khande, Sheikh Faizan Qayyum and Samir Ahmed Lon and Yasir Wani. These are the guys. Saqib Nazir writes in and Mohammad Altaf and others. Next one, that's a good delivery. Left arm pace, ball that one, and the batsman driven that one, but straight to the fielder there at mid-off. One by any run.
Merajuddin and Batimi. Score remains 9 for 1. We are in over number 3 of the match. Imtiaz lefty is bowling from that very end. For us it is forehand, and somebody writes in something beautiful. Thank you. 9 रन तीसरे ओवर प्रगति पर इम्तियाज लेफ्टी है गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी और ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद सीधी रहती है सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद। और अगर बात करें इश्तियाक इलाही और फरहाद की जोड़ी इस समय बीच मैदान में और गेंदबाजी का मोर्चा इसे संभाले हुए इम्तियाज लेफ्टी। अच्छी शुरुआत पहले ही ओवर में एक सफलता दिलाते हैं, बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं इम्तियाज लेफ्टी। उनकी ये गेंद फरहाद के लिए अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, हालांकि खेला जरूर, एक रन पूरा कर रहे हैं वहां पर, निश्चित तौर पर घातक हो सकता है, लेकिन जब तक थ्रो अगर सटीक स्टंप्स पे लगता तो खतरे में पड़ सकते थे। 1 रन और दोहरे अंकों में स्कोर पहुंचता हुआ 10 1 विकेट के नुकसान पर 2.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद। लगातार हमारे व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए इस मुकाबले का आनंद लेते हुए सेमीफाइनल मुकाबला, और जुड़ जाइए और जितने भी प्रशंसा अपने व्यूअर्स की करना चाहेंगे उतने कम जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से अपना प्यार और विचार देने के लिए बहुत बहुत आभारी। और तीसरा ओवर इस समय प्रगति पर, आकर्षक रोमांचक स्थिति इस मुकाबले में 214 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इम्तियाज लेफ्टी इश्तियाक इलाही के लिए बाहर अच्छी गेंद, उतना ही बेहतरीन स्ट्रोक, पीछे खिलाड़ी कैच कर लिया और इश्तियाक रॉबी के पारी का अंत होता हुआ उत्साह का ठिकाना नहीं है। और आप देख सकते हैं विजुअल, और ऐसी विकेट इश्तियाक इलाही जिसपे कि काफी कुछ निर्भर करता, लेकिन अंततः इस समय एक शॉट खेलने के बाद हालांकि ताकत नहीं दे पाए और दूसरी सफलता गिरती है मात्र 10 पे। Again a further batting side, chasing 214, needed this man out in the middle, and look at that shot, playing straight down to the throat of long on fielder. He does well. He was waiting for that one to grab that one. Nice grab, and there goes wicket number 2. The danger man is gone, and there goes wicket number 2 at the score of 10, and they are in tatters. Bastion Cricket Academy under the serious hammer and pressure at the moment. They lost the man who's in red hot form this time round. He's hitting the purple patch time and again, but this time round good undone from Imtiaz lefty. The man has picked up a wicket. He has gone for 8 and has picked up a wicket, and that to a precious wicket of this man Ishtiaq Robi, gone for few runs and doesn't bother the scorers to larger extent, is it? जी बिल्कुल, और जिस प्रकार से शुरुआत हो चली है, 2 महत्वपूर्ण विकेट पवेलियन जा चुके हैं, ज़हूर और इश्तियाक इलाही इस समय पवेलियन जा चुके हैं, तो कहना चाहिए कि लगातार इस समय प्रेशर की स्थिति, और लगातार हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ बने हुए बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे, लगातार शेयर करते रहिए। और जिस प्रकार से शुरुआत हो चली है, 10 रन 2 विकेट के नुकसान पर 2.4 के बाद, कहना चाहिए कि इस समय परिस्थितियां गंभीर से गंभीर, संकट की स्थिति बॉस्टन क्रिकेट एकेडमी के ऊपर, जिस प्रकार से 214 का विशाल लक्ष्य उनके सामने, और कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा सकता है कि एक बड़े स्कोर का जो प्रेशर है वो साफ झलकता हुआ। Well, won't say that. Exactly, they needed this man out in the middle, but that doesn't mean the things are over. There comes Kazi. He just backs into the middle. 2 slips in place for the newcomer, then followed by back feeder point, cover point, short extra cover, then look at that area, there's mid-off in place. On the onside, there is wideish mid-on to be precise, inside the 30-yard, then followed by fine leg in place. With this field, bowler continues to bowl. He is talking about Inayat Hussain. Thank you for your love. We're definitely allowed to request to someone to change his place. In the meantime, he comes on to bowl the next one. Outside the off stump, caught fishing on that occasion. Thank you, Faz, and Rabi, thank you for your love. He says phenomenal. Thank you, Tariq Mankna and others, and thank you. I'm feeling really well. Thank you, all the beloved viewers. Nazir score is 10 for the last of 2. You would definitely love to see some big shots coming at this crucial juncture. You know they need 214 to get, and they throwing the wickets away. Not a good ploy being used for by the batters. इम्तियाज लेफ्टी है गेंदबाज, और इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद सीधी रहती हुई, खेला जरूर लेकिन वहां पर खिलाड़ी, और एक आकर्षक फील्ड प्लेसमेंट समय लगा के रखा है टीम बोर्ड एंटरप्राइजेज के कप्तान ने। और जिस प्रकार से हालांकि शुरुआती ओवर्स में उन्हें 2 सफलताएं मिल गई, उनका उत्साह जो है 7वें आसमान पे क्यों ना हो। शुरुआती ओवर में आप ज़हूर और एक बड़े क्रिकेटर जिसकी काफी लंबे समय से प्रतीक्षा थी उनके क्षेत्ररक्षकों को, उनके चाहने वालों को क्षमा कीजिएगा, और उनके समर्थकों को, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, और इसमें पवेलियन जा चुके 10 पे 2 लगातार। थैंक यू ज़हूर खान।
and others for your love and sports. Score is 10 for the loss of 2. This broadcast is brought to you by Arco Fenestration, manufacturers of UPVC doors and windows, followed by Anthem Supports India, Fashion Fiesta, Shining Star Popper, MHM Multi-Fashion brand, Chaudhry Shabir, and Taimir is also watching. Thank you for your love. But this innings is the inning, and it will tell us that who's gonna survive in this very league, in this very tournament. And I can simply say, can Tiger survive? The line is done at the moment. जी बिल्कुल, और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे, किस प्रकार से यहाँ से रणनीति होगी, योजना होगी, ये देखने वाली बात होगी। सामने वाले छोर से नौर की शुरुआत अच्छी गेंद ऑफ स्टंप खेला जरूर, पीछे खिलाड़ी तैनात, हालांकि नॉन स्ट्राइकिंग छोर से काफी आगे निकल आए थे बल्लेबाज, लेकिन मना किया सुरक्षित क्रीज में बगैर किसी रन के। स्कोर अभी भी 10। Farooq Pinto, thank you for your love. Pinto and others, they're watching from that very distant place of grace. Thank you for your love. Enjoy the nature there. जी बिल्कुल, और बने रहिए हमारे साथ जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से, ये सीधा प्रसारण आप तक पहुंचता है इस आकर्षक निर्णायक मुकाबले में। इस ओवर में अगली बार और 12 अच्छी गेंद पूरी तरह से छकाती हुई बल्लेबाज को और विराम करते विकेट कीपर के दस्ताने में। यहाँ पर संयम, आत्मविश्वास रखना होगा यदि इस महालक्ष्य का पूरा करना है। आकर्षक का बल्लेबाजी कहना चाहिए इस समय करनी होगी, जिस प्रकार से परिस्थितियां हैं, एक साझेदारी की आवश्यकता। क्या इसमें सक्षम हो पाते हैं, क्या इसमें सफल हो पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। Well, partnership is quite important and it's quite evident they need a partnership badly at the moment. They're 10 for 2. The two batters out in the middle, Farhad and Qazi. They need to put their heads down and try to steady a partnership. जी बिल्कुल, एक साझेदारी की आवश्यकता। और इस ओवर में अगली बार सामने वाले छोर से हारून है गेंदबाज, और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद छकाती हुए बल्लेबाज को मजबूर किया वहां पर, और अंत तक गेंद को देखते रहे और गेंद सीधे विराम करते विकेट कीपर के दस्ताने में। स्कोर अभी भी टिका हुआ 10 रन। 3.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद 2 सफलताएं अब तक मिल चुकी हैं बर्ड्स इंटरप्राइजेस को, और कहना चाहिए कि पूरी तरह से इसमें किफायती कसी हुई गेंदबाजी इस ओवर में देखने को मिली है। रॉबी और आदिल जहूर, ये 2 मान्यता प्राप्त बल्लेबाज पवेलियन जा चुके हैं। एक बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर फिर लपेटने की कोशिश, खड़े खड़े अपनी जगह स्ट्रोक लेने की कोशिश, हालांकि काफी घातक हो सकता है। इस तरह के अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा बल्लेबाज को, गेंद की लाइन में आना होगा और उसके बाद गेंद की मिनट के हिसाब से स्ट्रोक्स खेलने होंगे यदि इस साझेदारी को और बढ़ाना चाहे तो। आकर्षक रोमांचक स्थिति समय बीच मैदान में बनी हुई। 3.4, 10 रन बगैर नुकसान के। फरहाद 2 विकेट के नुकसान पर, क्षमा कीजिएगा, फरहाद और काजी, ये 2 मान्यता प्राप्त जोड़ी इस समय बीच मैदान में बनी हुई। अच्छी गेंद और इस बार अंतिम समय में बैट और पैड मिलाकर सम्मानजनक रूप से खेला बगैर किसी रन के। Well, thank you Fayaz Ahmed for your love, and somebody writes in Said Tawfiq Gulzar, and Tantra Mudassir writes in, thank you all the blood viewers for dropping in your invaluable comments. Myself Manoj speaks alongside me Nazir in the com box, and it's 10 for 2 in over number 4 of the match. Last ball coming up, Harun continues to bowl and he has conceded 2. He has chipped in with 2, and Mir Sir Walaikum Salam, that's a dot delivery, and look at this time. I'm deeply impressed. Thank you for your love, and all of the beloved viewers. Z Yusuf and others is actually from Srinagar, and thank you. 10 for 2 after 4 overs. Well, Nazir, 4 overs done. They have just 10 on the board and they have lost 2 wickets. They have 8 wickets in hand, but look at that. 200. They still need 204 to win this one, which isn't going to be an easy. वर्तमान रन गति की बात करें 2.5 के हिसाब से अब तक रन बनाए हैं, और अगर हम रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें 12.69, तो इससे आप कल्पना कर सकते हैं धीरे धीरे से मुकाबला संघर्षपूर्ण, लेकिन परिस्थितियां जो है गंभीर से गंभीर होती हुई बास्टन क्रिकेट अकेडमी के लिए। Well, we can simply say that I can use the word ooh and ahs, oohs and ahs. And issue Shah writes in, thank you for your love, impressive love from Kufara. My supposed to belongs to that very area. It's 10 for 2. We're in over number 5 of the match. Got fishing outside the off stump. It was there to be put away, but doesn't get hold of that one. A dot delivery, flies over the blade, wicket keeper does the rest. बिल्कुल आकर्षक समय लगा के रखी है, प्रशंसा करनी होगी कप्तान की शुरुआती ओवर्स में एक दबाव की स्थिति बनाने की कोशिश, और अब तक उसमें सफल भी हो पाए हैं। हालांकि इस समय नाबाद बल्लेबाज अगर बात करें फरहाद और उनके साथ काजी इस समय बीच मैदान में बने हुए। एक दाएं हाथ का बल्लेबाज सीमा रेखा की ओर वहां पर
खिलाड़ी हैं तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया। 1 रन और खाते में जुड़ता, स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन 4.2 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान पर। वर्तमान रन गति 2.54 और रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 12.89। Well, our beloved viewers, come this way and watch this wonderful match. Big match of the summer. Another ultra class and high voltage encounter underway here at the centre. Don't fade away because they have got lot more batters to come. Look at that, they lost Adil, Zuhur and Robbie, but there are still batters to come and they can really give themselves charge. Up the outside edge and off the surface it goes to Zaid left to their first slip. No run, Abu Abid Miran, thank you for your love, and Adil Rashid writing script of your fluency, please. You will be updated belatedly today because we're busy with the commentary at the moment. This broadcast is brought to you by Arc of Fenestration, Anthem Sports India, Fashion Feast, the Shining Star Pampur and MHM Multi-Fashion brand. Next ball coming up, left arm pacer. He has conceded 9 runs and picked up a wicket. That's a good looking shot, but in the air, will this be held? No, doesn't. It goes down to where is the mid-up boundary for more runs. And one needed to break the shackles, and here is an example of that. He manages to break the shackles to larger extent. That's a boundary, welcome sign, and a welcome boundary. 15 for 2. We are in over number 5. 15 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर इसमें प्रगति पर है और कहना चाहिए धीरे धीरे से एक साझेदारी की आवश्यकता है। लगातार रहे कमेंटेटर बॉक्स में चर्चा हो रही है कि एक साझेदारी की आवश्यकता है और क्रिकेट की भाषा की बात करें, छोटी छोटी तिकड़ियां जो हैं इस मुकाबले को और भी ज्यादा बेहतरीन से बेहतरीन और एक सम्मानजनक लक्ष्य जो है उस तक पहुंच सकते हैं। क्या इसमें सक्षम हो पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। Well, Border is captaining this side. Somebody writes in, he is talking about the Bird Enterprise. Well, there is a slip in place, then there is a gully almost back with a point, short extra cover, mid off on the onside. There is mid on, long on the boundary, short mid wicket, a Scalig on the boundary, and a shot fine inside the third. That's a good shot, flying all the way down to the back with a point. 4 more runs, 19 for the loss of 2. There comes the ball number 5 and yielded a boundary. 2 back-to-back boundaries on the trot for the right hand. 19 for 2, and they need such kind of boundaries time and again because they can't afford to too many dot deliveries. They have to make sure that they knock the ball in the gaps and try to rotate the strike time and again. जी बिल्कुल 19 पे 2 4.5 के बाद और गेंदबाज इम्तियाज लेफ्टी इस ओवर में आखिरी बार लेग स्टंप पर दिशाहीन गेंद, विकेट कीपर भी चूके, गेंद जा रही है सीमा रेखा की और पीछे है खिलाड़ी और जब तक उसको सीमा रेखा के बिल्कुल अंदर फील्ड कर लिया जाता तब तक संभवतः सीधा स्टंप्स पे थ्रो लगा, हालांकि वहां पे वाइड का इशारा और 3 रन और खाते में जुड़ते हुए और कहना चाहिए कि आकर्षक इस समय मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। फरहाद जो इसमें नाबाद है 11 पे 16 गेंदों का सामना किया और काजी साथ दे रहे हैं, 1 पे 4 गेंदों का सामना किया। बेहतरीन लाजवाब विश्वसनीय प्रदर्शन और एक आकर्षक मुकाबला। 214 रन बनाने सेमीफाइनल मुकाबले को जीतने के लिए और फाइनल में प्रवेश करने के लिए अलीजान क्रिकेट क्लब के साथ भिड़ंत होगी एतवार को। Sunday is the day. Remember the day. On Sunday we shall be back with the grand finale of Shalbugh Super League 2022. Credit must be given to the organisers. Sheikh Faizan Manzo after this ball. Left arm pacer comes on the ball. That's a good looking drive. Beats the field, evades him and eludes him down to the middle boundary for more run. Score moves to 23 for the loss of 2. Adil Border not happy on that occasion, but that is a superb shot. Sublime touch of the back foot, driven handsomely. Look at that feet movement. Look at the left foot comes right out of that on that occasion, and he keeps his left foot out of the line of the ball, then lifting that one up down towards the mid off for 4. जी बिल्कुल और दर्शनीय स्ट्रोक कहना चाहिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ाया 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति के बाद। वर्तमान रन गति 5.40 और रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 12.40। काजी 5 पे और फरहाद 11 पे। अहमद जावेद मलिक माजिद रियाज के साथ था। संडे फाइनल की टाइमिंग है, जी हाँ, करीब 11 बजे वो मुकाबला शुरू होगा और एक बहुत बड़ा निर्णायक मुकाबला होगा। फिलहाल वर्तमान स्थिति की अगर बात करें, लगातार हमारे व्यूअर्स हमारे साथ बने हुए, बहुत बहुत स्वागत, आभारी और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि अन्य लोग इस समय इस मुकाबले के साथ जुड़ सकें। एक और चौका। Final ball yielded boundary number 3 up there, but they need runs. They need runs badly. They are desperate. They need runs.
and at this crucial juncture desperately needed runs by their side, and that's another boundary. And thank you all the beloved viewers. Somebody writes in a comment, and I forgot to use the word on that occasion. Thank you. It is Ashraf Sheikh and others. Thank you. And next time, short one way outside the off stump. He wanted to fetch that one from outside the off stump. You looked at this man. He was trying to chase that one way outside the off stump, but doesn't get to the ball, and ball flies away down to the wicket keeper. No harm done. 32 for 2. We are in over number 6. Last over of the mandatory power play coming your way. Keep watching and keep sending in the digital stars ever way. We definitely love to include your names. जी बिल्कुल, अशरफ शेख, लोन उमर और मुरसलीन बाबा के साथ एमडी एयाज लगातार हमारे साथ बने हुए। बहुत बहुत स्वागत जी के स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। 32 पे 2, 5.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद हारून है गेंदबाज इस ओवर में। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर और पूरी तरह से छकाती थी बल्लेबाज को। हालांकि गेंद का पीछा किया, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद और बल्ले का मिलन नहीं हुआ, अन्यथा खतरे में पड़ सकते थे। कोई क्षति नहीं, रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। स्कोर अभी भी टिका हुआ 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 5.2 के बाद फरहाद और काजी की जोड़ी इस समय बीच मैदान में बनी हुई। बास्टन क्रिकेट एकेडमी की ओर से 214 रन बनाने हैं इस सेमीफाइनल निर्णायक मुकाबले को जीतने के लिए। इस ओवर में अगली बार हारून की गेंद इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर पड़ने के बाद और बाहर की तरफ निकलती हुई और गेंद विराम कर विकेट कीपर के दस्ताने में। अच्छी रणनीति, लगातार ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के आसपास इस समय आक्रमण है गेंदबाज का, और यहाँ पे बल्लेबाज प्रयास जरूर कर रहे हैं, हालांकि फुटवर्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और जिस प्रकार से खड़े खड़े अपनी जगह स्ट्रोक्स लेने की कोशिश और काफी घातक हो सकता है। फिलहाल 32 पे 2, 5.3 के बाद हारून है गेंदबाज। इस ओवर में अगली बार फिर ऑफ स्टंप से उछाल लेते हुए गेंद, बल्ला चलाया, फिर सफलता नहीं मिली और गेंद ने किया विराम विकेट कीपर के दस्ताने में। रनों की गति में कोई वृद्धि नहीं। स्कोर अभी भी 32 पे 2, 5.4 के बाद फरहाद और काजी की जोड़ी बीच मैदान में और हारून गेंदबाजी के मोर्चे पे बने हुए। आकर्षक मुकाबला ये सेमीफाइनल शालबुग सुपर लीग वर्ष 2022 का इस खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान में चारों ओर अगर हम नजर दौड़ाएं तो कुदरत का तराशा हुआ और सिंध के किनारे बसा हुआ यह ऐतिहासिक खूबसूरत मैदान अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है विशुल्क प्रदर्शन ध्यान करता हुआ आकर्षक मुकाबला बीच मैदान में चलता हुआ। पारी का 6वां ओवर इसमें प्रगति पर 32 पे 2 और किफायती कसी हुई गेंदबाजी इस समय बीच मैदान में चलती हुई। Well, exactly. They have really been able to tighten the nose of the batters, not letting them break free. Well, let's find out the final ball of 6th over coming up. Last ball of the mandatory power play. Thank you, Lon Madhu and others for you allow. Lost ball, up the inner edge. Doesn't get hold of that one nonetheless. There was that one in front of point. Won't be any run. 6 down, it's 32 for 2. This broadcast is brought to you by Arc of Fenestration, followed by Anthem Supports India, Fashion Feast, the Shining Star Pumper, MHM Multi-Fashion brand. And this is the second semi-final coming your way. Bastion Cricket Academy and Bird Enterprises. Both are locking horns. Both are sweating it out here at the center. But look at the bowling of Bird Enterprise. They have been really able to put pressure on the batters. They have dented their confidence, and they have really put their opponents under the serious hammer and pressure. And look at the balls flying away up the deck, shaping away up the deck. Nazir, have you observed those deliveries moving away up the deck? And look at the batters of Bastion Cricket Academy, be it Adil Zuhur and his colleague Ishtiaq Krabi, both fallen very early and both thrown their wickets away. They were unable to put premium on their wickets. Short pause in the game. We've got a kind of a breather here, and we're definitely up to include the comments. Ahmed Javed, Lon Madhu and others, thank you for your love. जी बिल्कुल, और सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन करना चाहेंगे जे के स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लगातार अपना प्यार और विचार देते हुए। और इस समय स्थिति यह है कि 6 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। फरहाद 15 पे 22 गेंदों का सामना किया, और वहीं पे अगर काजी की बात करें तो 5 गेंदों से 5 रन। आकर्षक मुकाबला, और 6 ओवर पूरे हो चुके, आपको याद होगा 214 रन बनाने हैं इस निर्णायक फाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और मैदान में चलता हुआ और गेंदबाज जाहिद परिवर्तन के तौर पर, और देखना है ये परिवर्तन किस प्रकार से यहां से रंग लाता है। कप्तान के विश्वास पे खड़ा उतरना होगा, जिस प्रकार से शुरुआती ओवर्स में 2 विकेट अब तक चटका चुकी है टीम
बर्ड इंटरप्राइजेस की और बास्टन क्रिकेट अकेडमी। हालांकि एक साझेदारी धीरे धीरे से पनप रही है, लेकिन इस साझेदारी को आगे बढ़ाना होगा। करीब करीब 40-50 रन जोड़ने होंगे ताकि एक अच्छी स्थिति में ये दोनों बल्लेबाज बास्टन क्रिकेट अकेडमी को ला खड़ा कर दें। देखना होगा किस प्रकार से, किस रणनीति के तहत, किस योजना के साथ वे गेंदबाजी करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और बीच मैदान में पारी का 7वां ओवर लेकर के तैयार सामने वाले छोर से। Well, there is change in the bowling. 7th over begins the very first ball. Stepping bit leg side and a kind of a punch, not gentle, but he pushed the ball down towards the mid-off and gets a single. 33 for the loss of 2. Over number 7 in progress, and Zaid is operating for balls with the right hand. जी बिल्कुल, और जाहिद हैं गेंदबाज। परिवर्तन के तौर पर उन्हें गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया है कप्तान द्वारा, और चाहते होंगे कि यहां से इस साझेदारी को तोड़ा जाए। क्या इसमें सक्षम हो पाते हैं तो नहीं, और जी हां, वहां पर आउट करार दिया। बैकफुट पर जाकर के खेलने की कोशिश, बिल्कुल स्टंप्स के सामने पकड़े गए और अंपायर को कोई भी हिचकिचाहट नहीं हो रहा आउट करा देने में, तकबादा करार दिए गए। Soft dismissal. One more bites. That is 33 for 3. We are in over number 7 of the match. And India Varadi writes in, love you Lara. There goes wicket number 3. You both are great, Sajjad Ahmed, but thank you for your luck. Can I have your number? Later on we can really drop the numbers for you guys, and you are our inspiration. You're the guys who back us time and again. Well, we get a kind of a breather once again. We're seeing the back of another one. Look at the team. They're pumped up. Ahmed Javed writes in, thank you for your love. And if Almighty Allah bless us, and if he creates a chance for us, a platform for us, we can really try our level best. And Zaid Bashir, thank you for your love. But Zaid are among the wickets straight away. He has been able to castle the batter and he has trapped him in front of the 3 reds. If we put the ball tracker onto that one, this was dead with plumb. It was definitely going to hit the off and middle, and there goes wicket number 3, and captain makes his way in. Harun Khan, the legend of all time from Gandarbal, is in after the fall of the wicket of the third one who departed at the score of 33. And Abida writes in, thank you for your love. It is 33 for 3. We are in at the number 7. Nazir. जी बिल्कुल, और 7वां ओवर इसमें प्रगति पर है। 6.2 ओवर की गेंदबाजी, 33 पे 3। और हालांकि हारून इस समय बीच मैदान में पहुंचे हैं। काजी जो कि काफी लंबे समय से बीच मैदान में डटे हुए, लेकिन यहां पर एक साझेदारी की आवश्यकता और काफी कुछ निर्भर करेगा इस जोड़ी पे। कप्तानी पर ही पारी खेलनी होगी यहां से कप्तान को, और चाह उसमें वो सफल हो पाते हैं अथवा नहीं, ये देखने वाली बात होगी। संकट की स्थिति, 33 पे 3 बास्टन क्रिकेट अकेडमी का स्कोर। इस बार अच्छी गेंद, हल्के से उसको खिला, पीछे हैं खिलाड़ी, उन्होंने गेंद को फील्ड किया बगैर किसी रन के। 33, 3 विकेट के नुकसान पर 6.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद हारून, जिन्हें कि अभी अपना खाता खोलना है, टीम के कप्तान है बास्टन क्रिकेट अकेडमी की बात की जाए, और काजी इस समय नाबाद है। 6 पे 6 गेंदों का सामना किया। वर्तमान रन गति 4.95, और रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 13.50। ये गेंद इस बार खेला उसको, हालांकि हल्के कदमों के साथ वहां पे अपना खाता खोला कप्तान ने, और 1 रन के साथ ही कुल योग पहुंचा 34। 3 विकेट के नुकसान पर 6.5 के बाद, और गेंदबाजी का मोर्चा जाहिद के पास। Well, over number 7 lost ball coming up. We got a nice build up for this match. The crowd is in numbers, in scores around the park, but unfortunately for the crowd and for the blood viewers of Bastion Cricket Academy, they are not at its best at this very crucial juncture. That's a good shot, but equally to the task there. Fielder does mop up in style, just a single, and that takes the score to 35 for 3. Lon Ejaz writes in, he says that the man who was talking about, he has been sent to packing, he gone for golden duck. जी बिल्कुल, और इसी बीच हमारे व्यूअर्स भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अमान रियाज हमारे साथ जुड़ते हुए, और अमान के साथ लोन लोवर, लोन एजाज, सभी व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। अपना प्यार और विचार देने के लिए बहुत बहुत आभारी। जेके स्पोर्ट्स टाइम की कमेंट्री टीम द्वारा आपका स्वागत किया जा रहा है। इसी प्रकार से बने रहिए, अपना प्यार और विचार देते रहिए, और हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, ताकि आने वाले समय में और भी ज्यादा बेहतरीन सीधा प्रसारण आप तक पहुंच सके। इस समय सेमीफाइनल मुकाबला, निर्णायक मुकाबला शालबुग सुपर लीग वर्ष 2022 का इस ऐतिहासिक खूबसूरत शालबुग के इस मैदान में होता हुआ। 35 पे 3, 7 ओवर की समाप्ति के बाद उमर समाप्ति गेंदबाज हैं। पारी का 8वां ओवर लेकर
उमर गुड्डू है गेंदबाज। एक और परिवर्तन, तो किस प्रकार से वो यहाँ से, हालांकि कप्तान छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजों को आजमाना चाहते हैं। एक साझेदारी जो इस समय धीरे धीरे से हालांकि बन रही है, लेकिन चाहते एक मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति जो बनी है। मात्र 35 पे 3 विकेट गिर चुके हैं बॉस्टन क्रिकेट अकेडमी के, तो वे चाहते होंगे कि एक आध विकेट यहाँ से और चटकाया जाए और आने वाले समय में जो है एक मनोवैज्ञानिक दबाव की स्थिति बनाई जाए। इस बीच साजिद अहमद भट्ट हमारे साथ बने हुए हुई हिंदी कमेंटेटर, मैं शेख नजीर और मेरे साथी इंग्लिश आपके चहीते कमेंटेटर मुनव्वर तनवीर आपकी सेवा में उपस्थित है। इस समय बीच मैदान में मुकाबला चलता हुआ ये सेमीफाइनल आकर्षक मुकाबला साकिब लहरवाल मुगल के साथ हमारे साथ बने हुए बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इस समय बीच मैदान में। और क्रिकेट का ये कहना चाहिए कि संघर्षपूर्ण मुकाबला सेमीफाइनल इस शालबुग सुपर लीग वर्ष 2022 का। मीर जहूर हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत सभी व्यूअर्स का हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना प्यार और विचार देने के लिए। एक बार फिर इस ओवर में अगली बार उमर की गेंद, आज बार अच्छी गेंद, हालांकि वहां पर जगह जरूर मिली थी लेकिन स्ट्रोक नहीं खेल पाए और गेंद सीधे विराम कर विकेट कीपर के दस्ताने में। 36 पे 3 7.2 के बाद। Well, 36 for the loss of 3 wickets. We are in over number 8 of the match. Naveed is operating. He has bowled few deliveries in this very over. He has bowled 2 deliveries. He has sent down to 177 is still required. And that's in the air. Another soft dismissal. And this time round, Harun Khan has to walk back. And he plays it straight down to the throat of the fielder there at Gully area. And Adil Boda, the fielder there, and does well hold this on to the catch. Wicket number 4 goes down. And that in the form of the captain. And he has to walk back. It's 4-1, bites the dust. And Bastion Cricket Academy, they are in deep trouble at the moment. In tatters, they're 4 down. Nazir, big target in front of their side. 214. An uphill task beyond imagination at the moment. And they are lost. Here Sajju Musa writes in something. And I think that should have been avoided. And someone writes in Sajjad Ahmad, but thank you. But look at the score, 36 for the loss of 4, 7.3 overs done. Bastion Cricket Academy is in deep trouble. Look at the score, is 36 for 4 after 7.3 balls. And at this very crucial juncture, they need 177 more runs of 75 balls. Their current run rate is 4.880 and their required run rate is 4.16. And Barzan writes in something, will definitely throw out few words in Kashmiri. And if we explain this game in Kashmiri, we can say that Bastion Cricket Academy banai Sun Bajun per kshetra run. Abar Sabdai 7.3. And it is 36 for the loss of 4 after 7.3 balls. Walaikum salam, brother. And at this very crucial juncture, Bilal Raja and others are voting. Thank you. And this broadcast is brought to you by Arca Fenestration, followed by Anthem Sports India, Fashion Fiesta, Shining Star Papur and MHM Multi-Fashion brand. Kuche Fahim and others are watching. It is 36 for the loss of 4. Nazir, your brief comments at this very crucial juncture when they are falling like at this very crucial juncture, they're open inside. I'm talking of Bastion Cricket Academy. They're falling like pack of cards. जी बिल्कुल, हालांकि खेला जरूर, 1 रन पूरा कर रहे हैं, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे, तेज दौड़ विकेट के बीच में, और जब तक गेंद थ्रो करके वापस आती तब तक दूसरा रन भी पूरा कर लिया, तो 2 रन और खाते में जुड़ते हुए 38, 4 विकेट के नुकसान पर 7 ये संकट, और जिसे क्रिकेट की भाषा में कहा जाता है कि गंभीर स्थिति समय बनी बास्टन क्रिकेट एकेडमी के लिए। Well, there is a lot of fun left in this very match. Don't go anywhere. Come back in the air. But won't be held. It goes down to the back of the point. Another run fetched by the 2 batters. They're coming back for the second. Pushed for the second. And somebody writes in from Gul. Thank you, brother, for your allow. It is Muntazir Gut and Mirakta. Walaikum salam. And all other beloved viewers. Greetings. Walaikum salam from the set subject is sports time. It is 40 for 4. We are in over number 8 of the match. It is Naveed who's operating. He has conceded 5 and picked up a wicket. 40 for the loss of 4. 173 is still they require of remaining 73 balls.
जी बिल्कुल, अभी भी काफी लंबा सफर तय करना है इस पिच। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर खेला जरूर, खुद अपने फॉलो थ्रो में फील्ड किया वहां पर नवीद ने, बगैर किसी रन के स्कोर पर टिकता हुआ 40, 4 विकेट के नुकसान पर 7 दशमलव समाप्त। यहाँ पे ओवर पूरा हो चुका है, 8 ओवर पूरे हो चुके हैं, 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर बॉस्टन क्रिकेट अकेडमी जिन्हें के 214 रन बनाना है इस मुकाबले को जीतने के लिए। 40 for the loss of 4. He just has 6 wickets in hand with 12 overs to go. Won't be easy for your side. Bilal Raja writes in, thank you brother, and we will definitely say, oh dear my mighty Lord, remember and hear these comments, and may Almighty Allah bless our commentators, be it Nazir Sab and be it myself. We definitely love to thank you, and we definitely love to throw it out. Ameen and some Ameen. And with a short pause in the game, Ameen Lone, Shah, Sohail Fayaz and Bilal Raja. Thank you for your love and for your comments. जी बिल्कुल, और नए ओवर की शुरुआत होती हुई पहली गेंद उसको खेला, पीछे है खिलाड़ी तैनात, जब तक उसको फील्ड किया जाता और दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोड़ बदल लिए। 1 रन और खाते में जोड़ता 41 पे 4, 8.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद लंबा सफर तय करना है, लक्ष्य बड़ा है, 214 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। और एक साझेदारी, क्रिकेट की भाषा की बात करते हैं, साझेदारी की आवश्यकता है और क्या इसमें सफल हो पाते हैं ये दोनों बल्लेबाज, ये देखने वाली बात होगी। फरहाद और गाजी की जोड़ी इस समय बीच मैदान में। इस बीच ये गेंद इसको खेला जरूर, 1 रन पूरा कर रहे हैं, दूसरे रन के लिए जाना चाहेंगे, वहां पे खतरा हो सकता है लेकिन मना किया वहां पर नारसा की चोट से और वापस भेजा खिलाड़ी को। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ 43 पे 4, 8.3 के बाद। Well, halfway down in over number 9, 43 for the loss of 4 wickets. 4 quality batters out in. They have been sent to packing and they have been undone by some quality bowling, but 2 of the batters didn't play up to their mark. They were unable to announce themselves today. 4 of the batters have been sent to packing, and you can see that they are 4 down with 6 wickets in hand. Won't be easy job, but they should try and give themselves a chance that they're still in with a chance, because this is the game of glorious uncertainties. And look at that one, a kind of a ripper, beaten all ends up. Everyone is beaten all the way down to the boundary. It is a kind of a long stop area where you can't keep anyone to protect those balls which evade the wicketkeeper and go past him, and that's a boundary, and that takes the score to 46 for the loss of 4. And thank you Bataris for your love. Thank you. उपहार के रूप में मिलते हुए ये 4 रन और इसमें कुल योग 46, 4 विकेट के नुकसान पर ये गेंद और इस बार खेला, हालांकि वहां पर खिलाड़ी है तैनात, जब तक उसको फीड किया जाता 1 रन और 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज और स्कोर बढ़ता हुआ 47, 8.5 के बाद 47, 4 विकेट के नुकसान पर बॉस्टन क्रिकेट अकेडमी जिन्हें के बोर्ड इंटरप्राइजेज के विरुद्ध 214 रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए और फाइनल में प्रवेश करने के लिए। आकर्षक मुकाबला, सेमीफाइनल मुकाबला इस समय। और अगर बात करें शालबुग सुपर लीग वर्ष 2022 की प्रतियोगिता और उसके अंतर्गत ये दूसरा सेमीफाइनल, हालांकि आपको याद होगा पहले सेमीफाइनल में अली जाना जो क्रिकेट क्लब है वे फाइनल में प्रवेश कर चुकी है और यहां से विजयी टीम जो है दूसरी टीम बनेगी सेमीफाइनल की, जो कि फाइनल में भिड़ंत करेगी एतवार को अली जाना क्रिकेट क्लब के साथ। आमिर लोन अकबर जैदी के साथ हमारे साथ बने हुए बहुत बहुत स्वागत जी के स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से हमारे साथ आभारी। और इस समय स्थिति ये है कि 9 ओवर पूरे हो। For the loss of 4 quality batters have been themselves. Let us say that we are in with a chance. Don't say that we are nowhere near that very target. Show that. Let us showcase with talent, because world is watching you through Jiggy. नॉन स्ट्राइकिंग छोर से काफी आगे निकल आए थे बल्लेबाज, लेकिन मना किया वहां पर और सुरक्षित क्रीज में भेजा। कोई रन नहीं, स्कोर अभी भी टिका हुआ 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर 9.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद इस समय करीब करीब आधी पारी समाप्त होने को है, 10वां ओवर में प्रगति पर है और बॉस्टन क्रिकेट अकेडमी इस समय 48 रन बनाए। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर, हालांकि जगह मिली, खेला हवा में, गेंद नीचे खिलाड़ी और उन्होंने कोई गलती नहीं की, कैच रबक लिया और यहां पर बल्लेबाज को किया चलता। 5वां विकेट गिर गया है और इस प्रकार से 48 पे 5 और कहना चाहिए आधी टीम पवेलियन जा चुकी है। Well, exactly. They are 48 for the loss. So far, half of the team back into the dugout. This isn't the way you have to go after the Pacers. This isn't the way you come box. Hope you are all entertained in a good manner and in a nice way here at the center. Nasir Mir and others writing in. Masha, thank you for your love, Sohail Fayaz and others.
Well, Nazir, once again, these batters need to work on the basics. Those were into the bowlers. I can simply say that was in a kind of peril of the pace, isn't that? We can also use a word. We can also pronunciate it in a Kashmiri manner that was in a peril of the pace, peril or the feral. Both pronunciations are right. But this very match, you have to be gutsy out there in the middle. You have to show your class. And world was watching you, keenly observing you, but your batters are throwing the wickets away. Not the way going up to 214 mammoth total. You should have been showing something, a kind of a glimpse, so that everyone could have drop in the comments and could have believed that we have got some wonderful guns, and we could have been rest assured that our cricket is in safe hands. जी बिल्कुल, और जिस शैली के आप बल्लेबाज है उस शैली के अनुरूप आपको बल्लेबाजी करनी होगी, और यही क्रिकेट की मानता। और आप Javed, the big guns, Ali John Cricket Club is here. They are in the finale, and this team which will join them, they got I think so at this very crucial time. It will be early to say that they will win the match, but it looks like Adil Bowder side will definitely make it to the grand finale. जी बिल्कुल, और हालांकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, आखिरी गेंद तक कुछ कहना संभव नहीं होगा, और अगर एक अच्छी पारी यहां से एक भी बल्लेबाज संतुलित तौर पर और अपने कंधों पे दायित्व लेकर के इस पारी को खेलता है, तो मैं समझता हूं मुकाबला रोमांचक स्थिति में खड़ा हो सकता है। इसमें नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं सलीम, और इस बार ऑफ स्टंप पर लपेटा उसको पीछे खिलाड़ी, हालांकि रोकने की कोशिश, लेकिन जितनी भी प्रशंसा की जाए उनके शरीर से लगी गेंद वही लुढ़की, एक रन और खाते में जोड़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ 49 पे 5, 9.4 के बाद। लगातार इसे प्रदर्शन होता हुआ, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पर लगातार अंतराल के बाद विकेट्स गिरते चले जा रहे हैं बॉस्टन क्रिकेट अकेडमी के। ये देखते हुए कि 214 रन बनाना है इस मुकाबले को जीतने के लिए। लगातार हमारे व्यूअर्स भी हमारे साथ बने हुए हैं, अहमद जावेद, कश्मीर वैली सोलर्स, एफ ओवेस, बहुत बहुत स्वागत जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना प्यार और विचार देने के लिए धन्यवाद। इस बीच इस ओवर में अगली बार अच्छी गेंद बैकफुट पे जाकर खेला जरूर, वही पास में बगैर किसी रन के। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन गेंदबाजी में, और कहना चाहिए कि एक आकर्षक और नपीतुली गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है जहां तक बोर्ड इंटरप्राइजेस की टीम का सवाल है। आकर्षक मुकाबला, महराज गिलानी हमारे साथ बने हुए हैं, और बहुत बहुत स्वागत। 49 पे 5, 9.5 के बाद रनों की गति पे अंकुश लगा हुआ है। हालांकि इस गेंद को खेला बेहतरीन स्ट्रोक, पीछे है खिलाड़ी, जब उसको फील्ड करते हैं एक रन और खाते में जोड़ता हुआ, एक रन से संतुष्ट। ओवर पूरा हुआ, 10 ओवर की समाप्ति के बाद 50 पे 5, आधी पारी समाप्त, आधी टीम पवेलियन जज के, एक रन और वहां पर संभवतः ओवर थ्रो के रूप में। तो 51 रन 10 ओवर की समाप्ति के बाद 5 विकेट के नुकसान पर। वर्तमान रन गति 5.00, और रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो इस समय 16.5 के ऊपर पहुंचता हुआ, और कहीं ना कहीं कहना चाहिए आने वाले समय में काफी संकट की स्थिति बॉस्टन क्रिकेट अकेडमी के लिए। Well, Mehraj Gilani, thank you for your love. Jia Malik and Ash Nabuta and others, welcome. Thank you for your love. And score 50 for 5. Nazir, what a match underway. Ash Nabuta, welcome. Salam, brother. Sam, to you. It is Bastion Cricket Academy. We're reeling under the pressure. They're reeling under the pressure, to be precise. They're 50 for 5. After those rights in it. Thank you for your love. And Ash Nabuta, next server. Zaida begins as the pressure. Flighted ball, and batsman there was that one in front of Ska will get a single nonetheless. Thank you Zaid Sahil, Sheikh Azad and Ash Nabi. Score moves to 52 for the loss of 5. Over number 11 in progress. Well, thank you for your love. Thank you all the beloveds. This broadcast is brought to you by Arc of Fenestration, powered by Anthem Sports in the Fashion Feast, the Shining Star Pampur, and MHM multi-fashion brand. Come charging down the track. Oh, nearly dragged down on that occasion, but the ball evades the wicketkeeper and the fielder. Down to where is the long stop, and oh, wonderful stop made by the fielder using his boot. Football skills to larger extent. Mir John writes in. He's watching from Appletown. Super. Thank you, F. Weiss and Ash Nabuta. Thank you. It is 53 for the loss of 5. We are in over number 11. Nazir. 52 पे 5, 10.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद
काजी जावेद और सलीम की जोड़ी समय बीच मैदान में बनी हुई और कहना चाहिए सलीम इस समय एक पे नाबाद 2 गेंदों का सामना किया और कहीं पर काजी 12 पे नाबाद हवा में गेंद और लिख लीजिए 6वां विकेट। संकट की स्थिति 52 पे 6 और बास्टन क्रिकेट अकेडमी और भी उनकी जो स्थिति है गंभीर से गंभीर होती हुई। One-sided match, 6 down, 52 for the last of 6. We are in over number 11 of the match. Nazir, look at Zaidar angling into the batsman, luring him into the drive, and he was nowhere near the ball. Once again, that feet movement is negligible. Feet doesn't move at all. No feet movement, no footwork, no placement, nothing behind that one. Only playing away from the body and just ballooning up in the air down towards the backward point. He does well hold us on to the catch. Wicket number 6 goes down, 52 for 6. जी बिल्कुल भी यहाँ पर उनका फुटवर्क जो है वो काम नहीं कर रहा था। खड़े खड़े अपनी जगह अपने शरीर से दूर खेलने की कोशिश करना पड़ा और 6ठे विकेट के रूप में। Wonderful observation. Thank you, Dar Hamid. We'll definitely try in next coming days. Nazir Saab will definitely try to speak out a bit slowly, and because he want look at the wonderful committee he writes in, he will touch the next sides. You are right, Veer Irfan. It is not our fault. It is the fault of the cricket hero. We doesn't do anything with that. We can't handle that one on the screen, displayed on the big screen. And so don't worry, Veer Irfan. It will be rectified in a while. You have conveyed a message. I think it has gone to the scorer there. Thank you, Sohail Fayaz and others. Well, Nazir 6 down with just 4 wickets, just formalities remaining in this very match, and they would definitely love to wrap things up early as soon as possible, ASAP simply. जी बिल्कुल क्रिकेट की भाषा में अगर बात करें तो औपचारिकताएं ही बाकी रह गई है। मुकाबला इससे पल्ला पूरी तरह से हावी है गेंदबाजी का और जिस प्रकार से 52 पे 6 महत्वपूर्ण विकेट है चटका लिया इस ओवर में। अगली बार जाहिद की गेंद और इस बार खेला जरूर, वहां पर खिलाड़ी है तैनात पीछे, जब तक उसको फील्ड किया जाता 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ और स्कोर बढ़ता हुआ 53 रन 6 विकेट के नुकसान पर 10.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद। आकर्षक ये सेमीफाइनल मुकाबला शालबुग सुपर लीग वर्ष 2022 का। इस बार फ्लाइटेड गेंद लेकिन लेग स्टंप पर दिशाहीन गेंद, अपनी लंबाई और दिशा में नियंत्रण नहीं कर पाए गेंदबाज और एक और अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54 विकेट के नुकसान पर 10.4 के बाद। आकर्षक मुकाबला इस समय बीच मैदान में इस खूबसूरत ऐतिहासिक मैदान में फेब लेग स्टंप पर जगह दी और उठा दिया उसको सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इस छक्के के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 60 रन 10.5 के बाद 6 विकेट के नुकसान पर। आकर्षक बल्लेबाजी, लेकिन कहना चाहिए कि जिस प्रकार से विकेट गिरते चले जा रहे हैं, विकेट महत्वपूर्ण है, विकेट को सुरक्षित रखना होगा। हालांकि अभी भी 153 रन बनाने हैं 55 गेंदों से। Well, impossible for me, and he has knocked him over, cleaned him up. There goes wicket number 7. Beautiful delivery. Hits the bullseye. Dar Hamid and others. Thank you for your love. Well, Nazir 7-1 bites the dust. That's 6 and followed by cleaned him up. Nice comeback. And doesn't allow him to carry on with the same pace. Look at that one. Has cleaned him up, castled him. And Dar Hamid writes in, well, it isn't easy to compare with such peril of international arena. It is Prakash Walker. It won't be easy. Well, Jangir and others, thank you for your love. Well, Nazir, we get a breather here in the comment box once again, time and again. This broadcast is brought to you by Arco Fenestration, followed by Anthem Supports India, Fashion Feast, the Shining Star Power, and MHM Multi-Fashion brand. There was a time, I heard a lot of commentators talking about that. They were not able and they were not given the chance of throwing out the names of the sponsors. With the evolution in the world, with the evolution in the cricket, ever since the beginning of cricket has evolved. So is the case of commentary at the international arena. Nowadays we can use the names. He says he's talking about the teams. Well, there are 2 dugouts or on the backyard of this very center. It is Bastion Cricket Academy and Bird Enterprises. Bird Enterprise got the big name of the valley. Adil Border is playing in their lineup, and they got a big names. Adil Border, Irfan Lefty, Irfan Lara is also there. Imtiaz Lefty is also playing for their side. Thank you, Sohail Fayaz. Then followed by Zahid Dar is another talented gun. He was going through wonderful and a purple patch for past couple of years.
and today he was unable to whack into the middle because the top order batters, they gone berserk and they laid a solid foundation for 214. And then followed by Haris Sangin and Ishfaq Shah. Umar Gudu is also playing for their side. Some big names. And do join us in the next coming of final match of Shalbugh Super League 2022 on Sunday. Oh, this time once again the flighty trajectory. This is another ploy being used to trap the batsman, and this is Adil Border operating for the first time in this match. 60 रन 7 विकेट के नुकसान पर 11.2 के बाद, और इस बार गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी और कैच कर लिया। 8वां विकेट गिर गया है। 60 पे 8, ये है अब तक का देखा जोखा, और कहना चाहिए कि पूरी तरह से अस्त व्यवस्था करके रखा है टीम को। Trying to test himself and others who are not able to bowl in a big game or in other big matches, and he is trying to test his strength with the ball, and this is a good chance. He should bring on those who are never bowled. They should try the part-timers. They can come in, they can fancy their chances. It's 8 down at the score of 60. Rubat and the others, thank you for your love and support. And walaikum salam to all the beloved of JK Sports Time. It's 60 for the loss of weight. Well, only the formalities are remaining. Well, now the Farhad Ghani is making his way out to the centre. It is too late. It is too late for the Bastion Cricket Academy to say and to announce themselves that they are back into this very match. They're 8 down, but Nazir, the game of glorious uncertainties is still there. That principle on which cricket is based, things can really change. There was a time I used to cover that match. I covered that match. It was West Indies versus Australia, I think so. Or no, it was West Indies versus England. Then Bradshaw does well with Bravo, and they took their side home and they won the Champions Trophy way back in 2009. And that was a wonderful series, and that was a kind of a goodwill gesture from the players for their islanders. And that's a good shot. Will this be the fielder? No, doesn't. Straight down to the throat of fielder there. Just a single that takes score to next level. But somebody was talking about the scorecard. We can't do very much with that. This is Cricket Heroes' fault, and we're doing our level best. There is addition in total for the loss of 8. We are in over number 12 of the match. 61 पे 8, 11.4 के बाद, और मात्र 2 विकेट बचे हैं यहाँ पर। कितने जल्द इस पारी को समेटते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और एक स्लिप को लगा के रखा है वहां पर कप्तान ने। इस बार अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद, लेकिन काफी बाहर, और अंपायर को कोई भी हिचकिचाहट नहीं हुई उसे वाइड करार देने में। You think that Adil Lefty has been sent belatedly? He should have been promoted up the order today. जी बिल्कुल, और इस बार खेला जरूर, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। हालांकि सिंगल्स डबल से अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है यहाँ पर बोर्ड इंटरप्राइजेज की टीम को, क्योंकि जानते हैं लक्ष्य बहुत बड़ा है। इस समय कुल योग 63 रन 8 विकेट के नुकसान पर 11.5 के बाद यकतरफा मुकाबला बना दिया है। बेहतरीन, विश्वसनीय, लाजवाब गेंदबाजी का प्रदर्शन आज बोर्ड इंटरप्राइजेज द्वारा। Agree with your statement, 100% right. You nailed it to a larger extent. They have been really exceptional with the ball today. They have been bowling in the right areas. Border bowls that one, wrapped him on the pad once again. Shot for LBW, not given by umpire. The over comes to an end. 12 down, 63 for the loss of 8. 12 ओवर की समाप्ति, 63 रन 8 विकेट के नुकसान पर बास्टन क्रिकेट अकेडमी जिन्हें आज इस सेमीफाइनल मुकाबले को, जो कि शालबुग सुपर लीग वर्ष 2022 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला इस ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम शालबुग गांधरबल में खेला जा रहा है। और जिस प्रकार से शुरुआत हुई थी आज, और जिस प्रकार से बल्लेबाज आज आउट होते गए, लगातार अंतराल के बाद विकेट्स गिरते चले गए, और इस समय स्थिति यह है कि 63 रन पे 8 विकेट गिर चुके हैं। 12 ओवर के समाप्ति के बाद 8 ओवर का खेल बचा है, यानी कि अब भी इस मुकाबले को जीतने के लिए 48 गेंदों से 150 रन बनाने हैं। आकर्षक मुकाबला और यकतरफा मुकाबला कहना चाहिए। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद, और इस बार जगह मिली, निकाला उसको, पीछे है खिलाड़ी तैनात, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, और जब तक उसको फील्ड करके थ्रो करते 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ, और स्कोर बढ़ता हुआ 64। Well, Ahmed Javed, that won't be one-sided because the team that made into the finale is Alijan, and the team which will made into the finale is led by, namely, Adil Border. This team is evenly poised. The two teams can make a wonderful contest on Sunday coming your way. Join us then for all the fun, for all the flavor and spice of Kashmiri cricket will be coming your way
through JK Sports Time. Myself, Munawar Tanveer, and alongside me, Nazir Ahmed, will be available and will be at your disposal on that day. That's a good ball. Ballooning up in the air. Bowler not happy. Zaid says, yeah, that should have been taken. That should have been taken. That was an easy catch, a regulation one for the slip cordon. But it dropped short of the second slip. Adil Bowder there. 65 for 8. जाहिद है गेंदबाज, अच्छी गेंदबाजी और पूरी तरह से इस समय रनों की गति पे अंकुश लगा हुआ और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप पर हल्के से प्लेस किया, ये देखते हुए कि खिलाड़ी थोड़ा पीछे और जब तक उसको फील्ड किया जाता, एक रन और खाते में जुड़ता हुआ 66 विकेट के नुकसान पर 12.5 के बाद गेंदबाजी का मोर्चा जाहिद के पास और इसमें नाबाद बल्लेबाज आकिब और आदिल बीच मैदान में 3 पे नाबाद है। 5 गेंदों का सामना किया, वहीं पे 2 रन बनाए आकिब ने। 3 गेंदों का सामना किया, इस बार इस गेंद को खेला जरूर, पीछे है खिलाड़ी और जब तक उसको फील्ड किया जाता 1 रन और चहलकदमी करते और लगातार सिंगल्स से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है बास्टन क्रिकेट अकेडमी की अगर हम बात करें। और बोर्ड एंटरप्राइजेस जो इस समय पूरी तरह से उनकी गेंदबाजी कहना चाहिए सर चढ़कर बोलती हुई। Exactly, they're right on top at the moment. They're reaping the harvest. And Bastion Cricket Academy, they're falling like pack of cards. And credit must be given to the Shalbugh Cricket Board and their members for hosting such a wonderful league, Shalbugh Super League 2022. The 2 umpires of the match, Sheikh Faizan and Ibu Atif, these are the 2 officials of today's match. The second semi-final, final match is going to be heck of an encounter because I heard now that Adil Kachur might be playing for Ali Jan's side, and that you can understand from your comfort zones how big the final match will be. Big match, high voltage encounter coming your way. Join us. Flight trajectory once again and offer that flight, but the batsman just manages to keep that one out to it as the short extra won't be any run. 67 for the loss of 8. ये गेंद बाहर खेलने की कोशिश, वहां पर हालांकि हल्का सा प्रश्न पूछा जा रहा अंपायर से और नकारा उसको वाइड बॉल का इशारा। अतिरिक्त के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68 रन 8 विकेट के नुकसान पर 13.2 के बाद संकट की स्थिति औपचारिकताएं बाकी। इस बार कदमों का इस्तेमाल खेला लेकिन पीछे है खिलाड़ी तैनात। 1 ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को, 1 रन से संतुष्ट और 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन। और जिस प्रकार से अगर हम यहाँ पे आत्मविश्वास की बात करें, क्षेत्र रक्षण जो टीम कर रही है इस समय बोर्ड एंटरप्राइज की और उनके चेहरे देखने लायक उत्साह, और क्यों न हो कि मात्र 68 पे आपने 8 खिलाड़ियों को चटका लिया है और इस सेमीफाइनल मुकाबले में। Quite some achievement, no doubt about that. 69 for 8. Next ball, and that's in the air. Will this be held? It looks like fielder underneath. Hold this on to the ball. Wicket number 9 goes down. Adil Lefty has to walk back. Nazir Bastion Cricket Academy, they're 9 down with just a wicket in hand. I think it's all over for their side. Their journey ends here and they will be packing their bags and they have to be applied back home this evening, early this evening I should say. 69 for 9 after 13.3 balls. We are after 13.4 balls. We are halfway down, shade of a halfway down in 14th over. It's 69 for 8. कहना चाहिए जीत की कगार पे खड़ी है इसमें बोर्ड एंटरप्राइजेस की टीम बास्टन क्रिकेट एकेडमी के विरुद्ध और जिस प्रकार से 69 रन पे 8 विकेट चटका लिए हैं, 9 विकेट क्षमा कीजिएगा 9 विकेट चटका लिए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कहना चाहिए कि आज जिस प्रकार से तीनों डिपार्टमेंट्स की अगर हम बात करें, चाहे वो बल्लेबाजी हो, चाहे वो गेंदबाजी हो, चाहे वो क्षेत्र रक्षण को, कमाल लाजवाब प्रदर्शन किया आज बोर्ड एंटरप्राइजेस की टीम ने। Well done, Muzaffar about Akib. Thank you for your loss. 69 for the loss of 9. We are in over number 14 of the match. Next ball. Thank you, Farooq Ahmed, for your loss. That's in the air. Slogged away. All the way. Smoked away. 6 more. And that patch 6 out of it. 6 score moves to 75. Good shot. Muscled away. Smoked away. All the way down to the corner. 6 more. And that takes the score to 75 for 5. 75 पे 9, 11.5 के बाद 13.5 के बाद और बहुत ही बेहतरीन आखिरी जोड़ी समय बीच मैदान में साजिद और आकिब की। और कहना चाहिए कि अब औपचारिकताएं बाकी रह गई, हालांकि दर्शक चाहते थे बड़ा मुकाबला, क्रिकेट का ये महायुद्ध जिसे कहा जाता है ये सेमीफाइनल मुकाबला, लेकिन यकतरफा मुकाबला। जी हाँ बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्रिकेट का ये महासंघर्ष
रंगाराम जो आशा जताई जा रही थी, शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि इस प्रकार से 214 के विजयी लक्ष्य का पीछा करने उतरी बास्टन क्रिकेट अकेडमी की 75 पे 9 विकेट गंवा देगी। और बुद्धिमानी का परिचय देते हुए इस समय पूरी टीम की अगर हम बात करें, और लाजवाब प्रदर्शन आज बर्ड एंटरप्राइजेस के सभी क्षेत्ररक्षकों, गेंदबाजों और बल्लेबाजों द्वारा। Well, that's another loud and clear message for Ali John. Be ready for Sunday Dhamaka. We're coming at you, says Adil Border at side. Bird Enterprises, that's a good delivery. Moving away from the batsman, nowhere near that one, and swing and a miss. This has been the case with all the players today, this afternoon. जी बिल्कुल, और ये गेंद फिर पिछली गेंद की पुनरावृत्ति और बिल्कुल उसी दिशा में स्ट्रोक खेलने की कोशिश असफल, और गेंद विराम करते विकेट कीपर के दस्ताने में बिल्कुल स्टंप से सदैव विकेट कीपर, और इस बार अच्छी गेंद फिर ऑफ स्टंप पर, लगातार ऑफ स्टंप और उनकी गेंदबाजी का इस समय आक्रमण है, क्योंकि जल्द से जल्द शायद इस पारी को समाप्त करना चाहेंगे वहां पर गेंदबाज इशफाक। इस बार अच्छी गेंद, और जितनी भी प्रशंसा की जाए उतने कम, निश्चित तौर पर यहाँ पे रन बचाए। The brother of Ishtiyaq Kilai writes in. He says Zakib has been sent belatedly. Oh, that's in the air, but well, definitely drop short of the fielder. Does the ball drop short of the fielder and find us longer after a couple of bounces, a single added to the tally. 77 for the loss of 9 over number 15 in progress. 76 पे 9, 14.5 के बाद आखिरी गेंद ओवर की, खेला उसको, और वहां पर पीछे खिलाड़ी चहलकदमी करते हुए क्षेत्र रक्षण वहां पर किया। जानते हैं कि 1 रन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 1 रन और खाते में ओवर पूरा हुआ। 15 ओवर की समाप्ति, 77 रन 9 विकेट के नुकसान पर। आकिब और साजिद की जोड़ी बीच मैदान में, साजिद 7 पे और आकिब 5 पे नाबाद, और कहना चाहिए वर्तमान रन गति 5.13, और रिक्वायर्ड रन रेट की बात करें तो 27.20। Thank you, Indrabi, Pervez and others. Ghulam Hassan. Well, 77 for 9 over number 16. We'll start from the forehand. He says miserable, reckless, nonsense. Oh, dear Margaret, we can't say anything. That's a good looking shot. Down the ground, all the way down to the boundary. The word he used, it should have been avoided, isn't? But that boundary takes the score 81 for 9, but we can't comment about that one. 81 पे 9, 15.1 के बाद, और बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर 4 रन अर्जित किए अपने लिए और अपनी टीम के लिए। फारूक अहमद हमारे साथ जुड़ते हुए अपना प्यार और विचार देते हुए बहुत बहुत स्वागत। अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से सीधा प्रसारण शालबुग के इस क्रिकेट खूबसूरत ऐतिहासिक स्टेडियम से आप तक पहुंचता हुआ। बने रहिए हमारे साथ, और इसमें अंतिम चरण में ये मुकाबला चलता हुआ, आखिरी विकेट बीच मैदान में बनी हुई, और कब इस मुकाबले को संपन्न करते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 81 पे 9, 15.1 के बाद नए ओवर की शुरुआत हो चली है, और आदिल है गेंदबाज, 1 रन और खाते में जुड़ता हुआ। और आदिल ने आज क्या बेहतरीन पारी खेली थी, 60 रन उन्होंने बनाए थे, और जिसके चलते 213 का विशेष लक्ष्य स्कोर बोर्ड पे लगा था। 82 for the loss of 9. Adil Border has picked up 2 wickets. And he is the strong contender for the man of the match, or player of the match. Flighty trajectory once again. Oh, straight down to the throw of extra cover. That's it. It is Bird Enterprises who are through to the grand finale, which will be brought to you on same frequencies on Sunday. That's going to be a super Sunday coming your way. But that's it. They have been bundled out for 82, and Bird Enterprises won by 130 runs. They have handed them a crushing defeat, crushed under. Joining us, we shall be back next day with a new enthusiasm and a new game of cricket coming your way. Join us tomorrow with a new fun, with new game and a new venue. And that's it we have for you guys. Thank you for joining us. We'd like to thank all the beloved viewers of JK Sports Time and our sponsors, Arco Fenestration, Anthem Supports India, Fashion Fiesta, Shining Star Papur, and MHM Multi Fashion Brand. Myself, Manoj Speaks, and Nazir Ahmed. Take